So let me first take an example of trace distance, and then we will study some general properties of trace distance. And this is a very useful example. Okay, this is distance between two qubit states. Suppose we have a block sphere, rather block ball, and suppose there is one state sigma rho, and there is some state C. I'm drawing them of different lengths to indicate that uh, each one of them could be a mixed state as well. Okay, so suppose we have two qubit states on the block sphere, and we want to find the expression for the trace distance between the two states. So it's easy because I can represent my rho as sorry, there is a trouble now because we have been, let me use S here. So we have this S state, this sigma state, where this vector is given by S, and this is vector R representing the Hessian vector of this. And so I have this sigma, which is this state, and this then sigma vector is that Pauli vector of operators. Okay. Recall sigma was sigma x, sigma y, sigma z hat, and this R vector is R1, R2, R3. Similarly, S vector is S1, S2, S3. Okay, so this is the representation for two states in the block form. We want to find the distance between these two states. So we have this expression half trace of rho minus sigma. So we put expression for rho and sigma. So this will be half identity plus half R dot sigma minus half identity minus half S dot. So this goes away, and we have a half common ले लेते हैं. So this is 1/4 trace of R minus S dot sigma. ठीक है? R dot sigma मैंने ये जो sigma vector है. Now let's try to work out the modulus of this operator. So उसके लिए let me first work out some modulus of this operator where this y is now this vector. ठीक है? फर्स्ट करें ये कोई रियल वेक्टर है और ये सिग्मा पॉली वेक्टर है, तो इसका मॉड हम वर्क आउट. So this is to do that. Remember that modulus of any operator is a dagger a positive square. क्या आप उस ऑपरेटर का डैगर लेके मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ऑपरेटर जनरेट करें और फिर इसको डायगोनलाइज करें, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो आपने पिक करना है. The other unit vector, the eigenvector matrices remain as it is. So उसके लिए, so we are trying to find this. So let's work out what is this y dot sigma vector. So this is yx sigma x, yy sigma y, yz sigma z. And just to recall, the sigma x vector is
0, 1, 1, 0. Sigma y vector is 0 minus iota iota 0. Sigma z matrix is 1 minus 1. और इनको आप कंबाइन करें तो दिस becomes yz yx minus iota yy yx plus iota yy and minus yc. Okay, अब ये आ गया हमारे पास. अब हमने जो है वो अगर ये है तो what we want to do, we want work out y dot sigma dagger y dot sigma. तो इसका dagger और ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस आयोटा का प्लस आयोटा किधर आ जाएगा. तो ये हर्मिशन है तो ये वैसे ही रहेगा. yz yx minus y y और फिर ये जो वाला मैट्रिक्स वही आ जाएगा yz minus yz yx minus yx plus. ठीक है उसामा, मुबारक होगी आपको शादी. गेटिंग दिस या बोलना शुरू हो गया. ऑलराइट, सो अब हम ये इवैल्यूएट कर लेते हैं तो क्या बनेगा yz स्क्वायर तो बेसिकली आप एक तरीका करने का इसको ये है आगे कि आप ये प्रोडक्ट वर्कआउट करें. ठीक है, ये फिर इसका इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा yx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बल्कि कर लेते हैं लेट्स इसको इसके साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. ठीक है ना, मैं देखना ये yz है इसके साथ हुआ और ये इसके साथ माइनस के साथ है, ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा yx square y square yz. So the good thing is that it's already diagonal. Second, let's go to the next. So जो मेरे पास ये आ गया ना a dagger t, ये आ गया है y square 0, right? अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा y मार 0 0. ठीक है, so we have been able to find the square root operator. अब getting back to the distance, so d हो जाएगा 1/4 trace of this which is 2 times y mod और y हमने क्या डिफाइन किया हुआ है r minus s, so half r minus s. So this is the trace distance between them. Okay, और अगर आप इसको थोड़ा ग्राफिकली देखें, let me get back here. So हमने देखा कि जो trace distance है it's half of this geometric distance between the two qubit states. ये जो qubit states हैं उनके लिए जो trace distance है आप geometrically भी find कर सकते हैं. All you have to do is find the geometric distance between the tips of these vectors and then take the half. That would be your trace distance between the states.
All right. Let's take another example actually. अच्छा इससे एक चीज और भी हम देख सकते हैं. Let me draw it again. फर्ज करें आपके पास ये स्टेट रो है और ये स्टेट सिग्मा है. अब the question is, will a unitary operation, the same unitary operation on both states change the trace distance, and if yes, how much? Q. Good point. So the unitary operation on a qubit is essentially a rotation in the block form, right? So और अगर दोनों पे सेम यूनिटरी ऑपरेशन है तो एसेंशियली आपने इनको दोनों को इकट्ठा पकड़ के तो एक ही जिस तरह से रोटेट, तो जो टिप्स के दरमियान में ज्योमेट्रिक डिस्टेंस है इट विल नॉट चेंज. सो इट मीन कि अगर आप एक स्टेट है रो, it goes to new state rho prime like this, and the sigma goes to state sigma prime like this, then we see for at least for a qubit state that this will not change. But we can actually see in general okay, the trace distance between rho prime sigma prime, which is half trace rho prime sigma prime. This would be half trace rho prime आ जाएगा. So इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बनेगा u rho minus sigma u dagger, right? यहाँ भी ये रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, तो राइट से u dagger, लेफ्ट से u कॉमन आ जाए. अब जो ट्रेस है हमें पता साइक्लिक है कि हम जो मैट्रिसेस है उनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज, जैसे u dagger जो है इधर लेफ्ट साइड पे आ सकता है. दिस विल बी u dagger u rho minus sigma, but this is identity, so this is half trace rho minus sigma, which is same as distance between rho and sigma. So unitary operation doesn't change the distance between the states. Non-unitary operation does. जैसे आपने वो क्विज वाली एग्जांपल में देखा है कि when the states pass through depolarizing channel, then the distance change, and that was a non-unitary operation because depolarizing channel adds points. But if the operation is unitary, then the trace distance between the states doesn't change. डिफाइन करना होगा तो आपका मकसद है बेहतरी आपके आप पहली क्लास में जो नहीं थे हमने लिखा था there are many ways to define many ways, and this trace distance is just one. Another one is what you are saying, okay? But the answer to your question is yes, it is possible to define distance like that as well, but you will have to see what's the utility. This distance is something that people have seen would be something of very high usefulness in many situations. That's all. But it's not 50. Actually, we will study another type of distance in this course as well. Another type of measure of distance. Okay. ये जो ये हम वो जो y डॉट सिग्मा ऑपरेटर है ना उसका फाइंड करना चाह रहे हैं मॉडुलस.
मॉडुलस की डेफिनेशन ये, तो उसके लिए पहले मैंने ये कंप्यूट किया तो ये आ गया, फिर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, और हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिलेक्ट किया क्योंकि ज़्यादा स्क्वायर रूट लेंगे आइगन वैल्यूज का तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो बाय डेफिनेशन फॉर द मॉड वी सिलेक्ट पॉजिटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दिया। अब जो ट्रेस है इट्स 1/4 टाइम्स जो डिस्टेंस है, 1/4 टाइम ट्रेस ऑफ दैट थिंग, तो 1/4 टाइम ट्रेस ऑफ दिस इज 2 टाइम्स दिस, क्योंकि ये इसको ऐड कर दो ये 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू है r माइनस, good, all right, so we are clear from this that unity of this is a measure of a distance that uh, that doesn't change under unitary operation on states. Let's take another example. And actually, for this example, let's take another example, a special case. When your state rho and sigma commute. Okay, so we have a special case of 2 quantum states that their density operators commute. In general, it's not true, but for this situation, we can see one thing. And by the way, commuting means that you can diagonalize them both in the same basis. Let's say some basis I diagonalizes this one and this one. You can show it, using little bit of linear algebra, that you can prove it both ways, that if the states are diagonalizable in the same basis, they commute, and if they commute, they can shown to be diagonalizable in the same basis. So if we have states like this, then the trace distance between the states can be found to be, so rho minus sigma would be just I, rho I minus si. अब इस ऑपरेटर का हमने मॉडुलस फाइंड किया, and this is by the way क्योंकि diagonal ही है already, so I don't need to do that dagger and multiplication and then square, क्योंकि ये already diagonal है, so इसका जो है वो जो mod है वो just diagonal है, इसका mod आ जाएगा. And the trace of this thing is just and this is the classical Kolmogorov distance between the probability distributions with probabilities Ri and Ss. हाँ ठीक है, मैं इन जनरल दो स्टेट कम्यूट नहीं करती, लेकिन अगर कम्यूट करती हो तो देन वी कैन शो दिस. सर डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो जनरल पॉजिटिव ऑपरेटर है, देयर इज नथिंग अबाउट देम दैट टेल्स अस दैट दे कम्यूट. और कैन यू सी दैट इट शुड मेक सेंस? क्यों बॉस? कैन सी इट? क्यों सबिता आप? क्यों जिशान? समझ तो आ रही है लेकिन कैसे? टू कॉम्प्लिकेटेड. अब सिंपल जो पहली जो सिंपलेस्ट
आपसे अगर कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछे डेंसिटी ऑपरेटर की तो क्या है? It's a classical mixture with of quantum state with some probabilities. यही है ना? तो और अगर आप एक स्टेट को डायगोनलाइज इस तरह से लिख देते हैं तो अब इसका क्या एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि यू हैव स्टेट आईज विद प्रोबेबिलिटीज आर आईज, ऐसे ही है ना? इसका मतलब यही है ना? और फिर इसका क्या मतलब है? यू हैव स्टेट आईज विद प्रोबेबिलिटी एस आईज। तो एसेंशियली अगर आप इसका वो बनाए लेट्स से क्लासिकल काउंटर पार्ट, तो जो ये जो 1 2 3 स्टेट्स हैं, ये जो आर आईज हैं, दे बेसिकली यू नो दीज आर दीज प्रोबेबिलिटीज। इस तरह जो दूसरी स्टेट है सिग्मा, you can picture them as this RSI giving their probability distribution of states. So we have the same index set. So we have these classical probabilities. So this trace distance between them, क्योंकि ये classical distance की motivation थी, so we see that it's exactly the classical trace distance. It makes sense, okay? And sometimes this correspondence is sort of considered to be as a motivation for defining the quantum trace distance to be like this as a classical counterpart of this definition. So in general, ये different चीज है. Remember, always keep this thing in your mind. जो classical trace distance है, ये एक different quantity है, और जो quantum trace distance है, ये एक बिल्कुल different quantity है. It's applicable for quantum state, it's applicable for classical probability distribution. And only in this case, they turn out to be the same when the states commute. It essentially means that they are diagonalizable in the same basis, that you can assign a same index set to both states, and then we can talk about the probabilities of getting those states, and then these two definitions come to the same conclusion. Okay, but otherwise this is something different and this is something different. And in general, for quantum states, you cannot even talk about the classical Kolmogorov distance, L1 distance. You only have to talk about the trace distance. Okay. Does it make sense for more than 2 states? हम कराची और लाहौर के दरमियान में डिस्टेंस की तो बात कर सकते हैं, लेकिन कराची लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान डिस्टेंस जो है ना, वो doesn't make sense. Okay, you can construct some quantity that tries to measure something between the three things, but that shouldn't be called a distance. That is something else. Maybe you talk about area, spanned by the 3 points or something like that. हम कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं, बट अगर आप इंग्लिश में कोई वर्ड्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं तो इट शुडंट बी अ डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इंट्यूटिवली इज समथिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अगर आप 3 पॉइंट की बात करते हैं, यू कैन कम अप विद समथिंग एन एरिया spanned by the 3 points, something like that. Okay, but that would be something else. All right, so hopefully with these few examples of quantum channel and of these qubit states and this, to get some operational idea of the definition of trace distance. And now let me introduce an alternative definition of trace distance as we did for the classical trace distance, and hopefully it will give you another viewpoint about this trace definition. Alternative way to measure trace. Again, this new definition that I'm going to introduce, and I will prove that this is equivalent to the first one, is there to understand this distance and its properties.
but usually when you have to compute the distance, you go to the operational definition. So इसको जो है वो हम sort of operational definition कह सकते हैं. So this is the easiest one to work with. But these other ones, for example, this one that I'm going to introduce, no, it's actually very helpful when we have to prove properties of these systems. And we'll use this definition to prove a couple of theorems. Okay, and this is just like the classical alternative definition that I introduced, that the trace distance between two quantum states is the maximum over all POPMs such that the trace distance is rho minus sigma p. Let me first, try to give you the meaning of this, and then I'll prove that this is equivalent to this definition. So this says, what this says is this. इसको बेशक थोड़ा सा यूज करके लिखिए. Maximization overall. Let me first give you the understanding by assuming that this is a projective measurement, but in general this is true for any proof, not only for projective. So what this says, कि अगर आप कोई प्रोजेक्टर ले, कोई मेजरमेंट करते हैं, आप इस तरह करें रो और सिग्मा दोनों को मेजर करें. दोनों को मेजर करने का मतलब ये है कि और जो trace distance है, it's essentially the maximum possible difference between the measurement outcomes of two states. Okay, so trace distance is the maximum possible difference between the two measurement outcomes of two states if we are talking about the same measurement. बस करें आपके पास एक क्वांटम स्टेट रो है और आप इसको मेजर कर रहे हैं psi1, psi2, let's say up to psi n base. तो आपका कोई प्रोजेक्टर है वो या psi1 में करता है या psi2 इसका करता है. आपके पास दो स्टेट्स, ठीक है, एक सिग्मा भी है एक psi. तो आप let's say you project both of them to state psi2 और देखें कि जो आउटकम प्रोबेबिलिटीज है दोनों की उनका डिफरेंस. Let's say then project to psi1 or maybe psi3, and for each projection you compute the difference of the measurement probability. And not only psi1, psi2, you can take any linear combination. For example, you project to a plane spanned by psi1, psi2. Then you project to a plane spanned by psi1 and psi2. आप कोई भी जो plane में भी जो किसी भी combination से span है, maybe one projection could be the projection is whole space as well. So just like the power sector of classical distribution of बात करें, तो ये है कि आप दो स्टेट्स लें किसी भी बेसिस में जो ज़ाहिर है उसको मेजरमेंट की वो सारी चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए कि सम जो है of all measurement possibilities is 1, etc. But you do a measurement on two states, the same measurement, and you compute the difference between the measurement outcome. और सारी जो possible outcomes हैं उनके ऊपर उसको maximize कर लें. जो maximum difference है, that is your trace distance. So one other motivation for this definition, अभी हमने equivalence को prove नहीं की, I'll show shortly that this is equivalent. For this definition is this, that there's a nice physical interpretation of this distance. Because it's not something arbitrarily जो हमने ऐसे किया हुआ है. It has a relation to measurement outcome, which is what we care about any system at the end of the day, right? We have all this quantum mechanics built up, this whole structure only to explain the measurement outcomes that we get. So this relates the measurement outcomes to this trace distance. कि जो trace distance है, it's the maximum difference between two outcome probabilities of two states. समझ रहे हैं इस definition को? This is another way of imagining the trace distance between two states. Let me now show its equivalence. जो इसकी equivalence है वो थोड़ी सी involved है. तो अगर आपको पहले दो में सारा अलजेब्रा क्लियर ना भी हो तो प्लीज bear with me.
and you can repeat it from the book as well. But I want to go through it. जो proof है, normally I skip the proofs. तो इसकी एक वजह ये है कि इसमें I introduce a few other, पता नहीं आप शायद वो चीजें पहले से जानते भी हो, तो just to repeat some of the things from linear algebra जो कि हमें और जगहों पे भी helpful होगा. Let me start with the proof. So we can show that rho minus sigma can be written as Q minus S, such that Q and S are positive operators with orthogonal support. In general, ये जो rho और sigma है, ये positive operators तो हैं, but they are not on orthogonal support. This, we can't say anything. हमारे पास दो general state हैं, rho और sigma. तो वो हो सकता है कि तमाम जो basis vector उनके अलावा उनका कुछ ना कुछ projection है. But we can show that rho minus sigma is equal to the difference of two positive operators on orthogonal support. And let me first show this. अच्छा, इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि rho is equal to Q और sigma is equal to S. ऐसे नहीं है. The difference is equal to this difference. Okay, and let me show how we can show this. So this rho minus sigma can be written as some UD U, right? हम इसको इसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में यूं लिख सकते हैं. और चूंकि हमें पता है कि रो भी पॉजिटिव ऑपरेटर है, सिग्मा भी पॉजिटिव ऑपरेटर है, so what we can say about the eigen values of this rho minus ये पॉजिटिव जरूरी नहीं है. अगर तो ये अकेला रो होता ना तो फिर तो मैं आपकी बात मान लेता. बाय डेफिनेशन रो की आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये रो माइनस सिग्मा भी है. यू इमेजिन कि अगर ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो इसकी भी आइगन वैल्यूज हैं लेट्स से 0.9 0.1 समथिंग, और इसके आइगन वैल्यूज हैं 0.1 0.7 एंड समथिंग. तो आप डिफरेंस लेंगे तो पहले डायगोनल, फिर डिफरेंस भी डायगोनल ही होगा, लेकिन डायगोनल में पहली एंट्री नेगेटिव आ गई. नहीं, लेकिन मैंने उस एग्जांपल वो भी तो पॉसिबिलिटी इसमें इंक्लूडेड है ना. तो जो भी हम बात करें उसके लिए वैलिड होगी इसमें. तो अगर वो स्पेशल सिचुएशन हो तब भी d का पॉजिटिव होना जरूरी. There's only one thing that I can say about it, that is कि ये सारी रियल होगी. They can be positive, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव. सिंपली क्योंकि हमें पता है कि इनके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी रियल, रो और सिग्मा, ये दिस वी कैन से फॉर श्योर. और चूंकि इनका ट्रेस जो है वो भी जीरो है, क्योंकि इसका ट्रेस 1 है, इसका ट्रेस 1 है, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं दे हैव टू बी रियल, बट सम विल बी पॉजिटिव, सम विल बी नेगेटिव. दैट्स व्हाट आई से. सो इट मीन I can expand this thing like this: u1, u2, all the way to n. Where this u1 is a vector, this is a vector, and this d would be lambda 1, lambda 2, all the way to lambda n, everything at 0, and then in the matrix here, u1 star, u2 star, all the way to. ठीक है. अब इनमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. So what I do, I convert this thing into two parts. First, ये positive है, so I keep this u1 and I keep this lambda 1. I keep this. First ये negative है, तो मैं इस जगह पे 0 कर देता हूँ और इधर भी 0 कर देता हूँ. और फर्स्ट अगली भी नेगेटिव है, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ. फर्स्ट जो फोर्थ वाला वो पॉजिटिव, so I put u4 lambda 4 and u4. So similarly, I keep going plus. I then put minus. तो वो नेगेटिव वाली थी ना, वो मैं सेपरेट कर देता हूँ, लेकिन माइनस यहाँ पे कर देता हूँ. तो ये पहला 0 देगा, यहाँ पे u2 u3 फिर 0, फिर ये 0 lambda 2 lambda 3 0 0 u2 star.
अब मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव को ना दो पार्ट कर दी, नेगेटिव सेपरेट कर दी, पॉजिटिव सेपरेट कर दी। और अब देखें इनका सम अभी भी यही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना सिर्फ आइगन वैल्यू जीरो किया, आइगन वेक्टर जीरो किया। तो व्हेन यू ऐड देम अप, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री जिसमें जीरो है वो उसमें नॉन जीरो, जो उसमें जीरो है इधर नॉन जीरो। और अब ये भी टोटली पॉजिटिव है, ये भी टोटली पॉजिटिव ऑपरेटर है, क्योंकि इसके आगे वैल्यू या तो जीरो है या पॉजिटिव है, इसकी भी या जीरो है या पॉजिटिव है। दिस इज योर क्यू, दिस इज एस। प्लस देयर इज अनदर थिंग, दे बोथ हैव ऑर्थोगोनल सपोर्ट, के जहां पे इसका आइगन वेक्टर जीरो है वहां पे उसका नॉन जीरो। सो अगर आप इसके आइगन वेक्टर्स को इसके आइगन वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करें टू गेट अ जीरो। एंड आल्सो ऑर्थोगोनल सपोर्ट मीन दैट QS SQ, क्योंकि वो जो करस्पॉन्डिंग rows and columns हैं, they would be zero in such a way that the product of Q and S is. So it means the difference of any two positive operators can be written as the difference of two positive operator with orthogonal support. Everybody's okay? You Munib? Good. We can now prove the theorem, hopefully. और theorem में आपको पता है, we have to find this quantity, and this would be nothing but Q minus S dagger, Q minus S, right? Something like. Or actually, instead of this, let me do it from here. So this Q minus S is nothing but Q du dagger, and this Q minus S is U du dagger. ठीक है ना? ये जो Q minus S है इसको हमने ये U du dagger लिखा. So this would be U. This is identity. How do you do D square U dagger? Okay. अब मैंने इसका इस मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द आइगन वैल्यूज, एंड अगेन दिस यू डू दिस, और इसका जब स्क्वायर रूट देंगे तो आई हैव टू सेलेक्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट वैल्यू, सो व्हिच मीन दैट आई विल गेट u d u ब्रैकेट व्हिच इज, अब देखें जो अगर मैं d का मॉड ले लूं तो एसेंशियली आई गेट अ प्लस साइन है, ठीक है ना, क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज प्लस हो जाएंगी. So this would basically be Q plus S. So these are two important relations that you will need for the proof. एक तो ये कि rho minus sigma is Q minus S, और दूसरा ये कि rho minus sigma का जो मॉडुलस है it's Q plus S. इसका स्क्वायर रूट नहीं, जो फंक्शंस हैं मैट्रिसेस के, they are defined to be functions on the eigenvalues, ठीक है. And actually it can be proved as well. अगर आप उनको expand करें using the Taylor series, so you see के u को जितनी दफा, क्योंकि Taylor series में you can define the power of this x. So when you have x square, so जब u dagger करते हैं तो वो x square में essentially the square transfers to b. तो जो स्क्वायर रूट ऑपरेटर है, कोई भी जो फंक्शन है स्मूथ फंक्शन, इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ द पावर of operator.
सो पावर्स में जो यू और यू डैगर है वो चूंकि आइडेंटिटी होते जाते हैं, सो दे वो, क्योंकि ये डी मॉडुलस है ना, इसका मतलब आपने सारी आइगन वैल्यूज का प्लस मॉडुलस कर देना। अगर मैं यहाँ पे सबका मॉडुलस कर दूं सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप उसके बाद इनको आप सेपरेट इस तरह भी रहने दें तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड एस पे जाना चाहो तो सेपरेट आउट करेंगे तो इट विल बी क्यू प्लस एस। ओके okay, so let's go to the proof of the theorem. So we see that we define this trace distance to be half trace of rho minus sigma, and this rho minus sigma mod is nothing but q plus s, or trace so है distributed, so this becomes trace of q plus trace of s, but remember rho minus sigma is equal to q minus s, which means that trace of rho minus sigma is equal to 0 is equal to trace of q minus s। ये इसलिए है कि trace of rho minus sigma is trace of rho minus trace of sigma, और क्योंकि rho और sigma दोनों का trace 1 होता है, so 1 minus 1 is 0, so this means that trace of 2 is equal to trace of 4। so ये दोनों trace बराबर हैं, so I can write it 2 trace of q, so let's just write it। so ये जो trace distance है, it's equal to trace of this positive operator। now let P is a projector such that when you project this state q minus sigma, it gives you okay, so I'm defining this P to be a projector जी। ठीक है, trace of rho minus sigma is equal to trace of rho minus trace of sigma, trace of rho is 1, trace of sigma is 1, so by definition the density operators have trace 1। okay, so let's get back here, so I'm defining okay this projector P to be a projector जी। वैसे ट्रेस के केस में तो इट डजंट मैटर, ठीक है, तो जब आपने देखें जो प्रोजेक्टर है इसका रिस्पांस टू मेजर में, तो जब आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे होते हैं तो ट्रेस की जिधर मर्जी लिख लें, तो जब स्टेट फाइंड कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्टर दोनों तरफ ही आता है, एक तरफ पी आता है, एक तरफ पी डैगर आता है, राइट साइड पे पी डैगर होता है। ओके, ऑलराइट, सो आई एम डिफाइनिंग दिस प्रोजेक्टर पी to be such that it projects this rho minus sigma to q, okay, or on the other hand, okay, I can write this rho minus sigma as q minus s, so I'm essentially defining this projector to project out in a space spanned by q, okay, and I'm projecting out the space spanned by s। Basically, you can imagine जो आपकी space of positive operator है, you can divide it into two parts. One is the q part, and then the other space orthogonal to it, which is s space। क्योंकि जो rho minus sigma है उसकी positive eigen values जो है वो ये q में है, और जो negative eigen value के corresponding eigen vectors हैं वो s में है। So if you can define a projector
that projects your general states rho minus sigma to a space spanned by Q, then all you have is now only positive eigenvalues. So जब आप trace find करेंगे, you will get some number, and we have already shown a trace of Q is actually the distance. So any other projector other than this projector will project somewhere else. So suppose it's project to most of Q, but maybe little bit of S. तो S की चूंकि आगे वैल्यू नेगेटिव है, तो आप ट्रेस फाइंड करेंगे तो टोटल आंसर इससे कम हो जाएगा. ठीक है रजा, इस आर्गुमेंट को समझ रहे हैं? जो P प्रोजेक्टर है ये मैंने डिफाइन किया है ऐसा जो आपको Q के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर देता है, और Q के अंदर वो वाला पार्ट है आपकी स्टेट रो माइनस एस का जिसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर हम P को यूं डिफाइन करें तो हम देखते हैं कि क्योंकि ये Q में प्रोजेक्ट कर रहा है, सो दिस इज ट्रेस Q, सो दिस इज सम नंबर एंड दैट नंबर इज एक्चुअली योर ट्रेस डिस्टेंस. अब अगर आप अपना प्रोजेक्टर P के अलावा कुछ भी और डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, ज़ाहिर है आप Q के अलावा कुछ S में भी करेंगे क्योंकि टोटल स्पेस जो है इट्स स्पैन्ड बाय Q एंड S. कुछ आइगन वेक्टर Q में है कुछ S में, तो Q के साथ S वाले भी आप डाल लेंगे, या आप एक Q आप कहते हैं कि मैं पूरी Q में उसकी सब स्पेस में, अगर Q की सब स्पेस में करते हैं तो कुछ Q के पार्ट निकाल देंगे. तो दोनों सूरतों में अगर आप Q का कुछ हिस्सा निकालते हैं या S का कुछ हिस्सा ऐड करते हैं, जो ट्रेस है इट विल बी लेस देन ट्रेस Q. तो कुछ निकालेंगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर कम हो जाएंगे, अगर S से कुछ ऐड करेंगे तो कुछ नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे. सो योर ट्रेस वुड बी लेस देन व्हाट इज ट्रेस Q. So it means कि जो trace distance है, it is, तो हमने U define किया हुआ है operationally, this is equal to trace of P rho minus sigma if P is a projector that projects along Q, and if P is anything else then this is less than this. So in general there is this inequality. तो यही वो थ्योरम था जो हमने, जो मैंने यूं लिखा था, वहां पे मैंने मैक्स लिख दिया था एक ही बात, maximally this is equal to this, but in general this is smaller than this. By the way, equal to थोड़ा सा जनरलाइज किया जा सकता है. We can extend it to for any POV and not only projective measurements, and we get the same result. So physically this means कि अगर आपके पास rho और sigma दो states हैं which are close in trace distance, then any measurement will give rise to a probability distribution function that are also close. I think a statement will prove that mathematics. So I'll prove it for general POVM later. So कोई question so far? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही? चलें, good. जबरदस्त. So ये जो distance measures हैं, they are very ubiquitous in almost any area of quantum information that you go, because they help you quantify the impact of noise. कि अभी हम, because the same thing is applicable, अभी हमने आपने बल्कि एक मेजरमेंट जो है वो नहीं, अभी तक आपने डायनामिक डिस्टेंस कोई मेजर नहीं किया, वो जो इवन फॉर डीपोलराइजेशन चैनल वाला था इट वाज स्टिल अ स्टैटिक डिस्टेंस, क्योंकि आपने आउटपुट दो आउटपुट के दरमियान में किया. बट यू कैन डू इट फॉर इनपुट एंड आउटपुट एज वेल, कि अगर एक इनपुट जो है वो किसी चैनल से पास होती है तो जो आउटपुट है उसके दरमियान और उसका कितना डिस्टेंस है, यूजिंग द सेम मेथड. Okay, so I think it's enough. So let's meet tomorrow. Quiz कर लें.